In the 10th class, we have studied about the trigonometric ratios, but that of angles which are less than 90 degrees. So I would like to recall certain things before I go further. We have a convention in dealing with triangles. As we know, this is always a right angle, and the side opposite to right angle is always called hypotenuse. So we represent it by H, right? Then we have an angle of interest. In right angle triangle, we have an angle of interest. If I call it theta, then the side opposite to this angle theta is always called perpendicular. Remember this thing, side opposite to angle is always called perpendicular, and side with the angle is always called base. This is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. Now these three sides, E, B, and H. Out of these three sides, we can make pair of two sides at a time. Then how many pairs we can make? We have 6 possibilities. And each pair when expressed in the form of ratio belongs to a trigonometric ratio. Okay, and among these we have sine of this angle theta. This ratio always corresponds to this angle theta is perpendicular upon hypotenuse. Cosine of theta is base upon hypotenuse, and tangent of theta is tan theta is perpendicular upon base. Just I was talking about now reciprocals of these. have you any experience in Cosecant theta is 1 upon sine theta, so that it becomes h upon p. Right? Reciprocal of cos is called secant theta. Secant theta, that is 1 upon cos theta. So this is h upon b. And similarly, reciprocal of tan theta is cot theta, 1 upon tan theta, and that is base upon perpendicular. So these are 6 ratios, each ratio involving 2 sides of the triangle at a time. And because this is side upon side, each trigonometric ratio is a pure ratio. No units are associated with it. Okay? The only thing you have to take care of is perpendicular, base, hypotenuse. All these 3 sides should be expressed in the same units. If this is in centimeter, this is in centimeter, this should also be in centimeter. And if these are, if one is in meter, then other 2 also should be in meter. So units should be same. Then these are pure ratios. All these values are pure ratios. Okay? Okay. And a circle when divided into 4 equal parts, each part is called a quadrant. When a circle is divided into 4 equal parts, each part is called a quadrant. So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Now this is a convention. What are the difference you feel while we are in This is a convention. We always measure angle anti-clockwise. So we go like this. So first, second, third, fourth. That's why it is written like this. The order has to be maintained like this only. Okay? Is this clear? Now
if the radius of this circle is 1, the radius of this circle is 1, what are the coordinates of this point? This is 1 0, means x is equal to 1 and y is 0. Coordinates of this point is 0 1. Coordinates of this point is -1 0, and coordinates of this point is 0 -1. ये हमने क्या मान के लिखे? ये हमने मान के लिखे कि रेडियस जो है 1 यूनिट का, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज रोटेटिंग ऑन दिस सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इफ आई कॉल दिस एज इनिशियल आर्म एंड दिस इज इनिशियल आर्म एंड दिस इज आई रोटेटिंग आर्म और टर्मिनल आर्म, this is terminal arm. So this arm is rotating like this. This is rotating like this. Okay. So this arm will go in first quadrant first. It will go in second quadrant. It will go in third quadrant. It will go in fourth quadrant. And if it is permitted to continue as arms of the clock. Now, when we are in first quadrant, अभी कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत आसान बातें बताऊंगा मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे किस प्रकार से हम जाके एंगल की बातें करेंगे उसके लिए। यहाँ पे हमारे पास एंगल है थीटा, आई कॉल दिस एंगल एज थीटा एंड से दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। when this point is at this, when this terminal arm is at this point, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इस कोऑर्डिनेट को मैं बोलता हूँ x और यहाँ से यहाँ तक इसको बोलता हूँ y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? हाँ अंशु, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे बेटा? ग्राफ में पढ़ के बताने, यहाँ पे पढ़ के बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यहाँ से यहाँ तक है x, यहाँ से यहाँ तक है y। जतिन आप बताओ। सर x एंड y। यस, x, y, x, y, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इस तरफ पॉजिटिव होता है और y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो x मेरा इस तरफ आ जाएगा, तो x नेगेटिव हो जाएगा, y क्योंकि ऊपर है वो पॉजिटिव रहेगा। जब ये पॉइंट घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तब x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा, और ये घूम के वापस जब इधर चला जाएगा तब x वापस इधर आ जाएगा, तो x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा। तो इस पॉइंट की लोकेशन के अनुसार x और y जो पॉजिटिव निगेटिव ये वाली शेप लेते हैं। इसी से हम किस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो कौन से साइंस लेगा, प्लस प्लस लेगा, माइनस प्लस लेगा, माइनस माइनस लेगा या प्लस माइनस लेगा, वो हम डिटरमाइन करते हैं इन्हीं चीजों को देखते हुए।